The boy who broke the bank. The meaning of this line is the boy who is broke the bank, जिसने बैंक को तोड़ा. Now the story started with Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govind Ram. Nathu was grumbling. Grumbling means he was very angry. Angrily, he was swept the steps. He was sweeping. He was cleaning the steps of bank, People Nagar Bank. People Nagar is a place. वहाँ का जो बैंक था उसके सीढ़ी को वो झाड़ू दे रहा था नथु. And who is the owner of the People Nagar Bank? Seth Govind Ram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. So he was so angry. We don't know the reason why he is angry, but he was so angry that when he was dusting so carelessly that the whole dust is going on the cloud. जोर से झाड़ू देने से क्या होता है, सारा धूल ऊपर जाता है और फिर वो अगेन इट इज डाउन ऑन द स्टेप ओनली, फिर से वो स्टेप में ही गिर रहा था. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. जब वो ये सब कर रहा था, अपने डस्टबिन के पैन को जोर जोर से झाड़ रहा था, तब कौन गुजरा वहां से? सीताराम. He was the friend of Nathu. Now children, you understand Nathu is the sweeper of People Nagar Bank. Who is Nathu? Nathu is the sweeper boy, a young boy who is sweeping the People Nagar Bank, and his friend Sitaram is a washerman's son. He was cleaning the clothes of others. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. तो सीताराम कहाँ जा रहा था? He was going for delivery the clothes. वो क्या करता था? क्लीनिंग और आयरनिंग करते थे कपड़ों को. तो वो कहाँ जा रहा था? He was going to balance on his head. वो अपने कपड़ों के जत्थे को माथे पे बैलेंस किया हुआ था. Now what happened? Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? So now what happened? उसने क्या बोला नथु को? Why you are raising so much dust? You are angry because the bank is refused to pay you 2 rupees extra. तो नथु ने क्या 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे. ये बहुत पहले की स्टोरी है, इसलिए 2 रुपीज बहुत तब के जमाने में 2 रुपीज बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो उसने 2 रुपीज एक्स्ट्रा मांगे थे अपने महीने जो सैलरी में है उसको बढ़ाने की बात की थी बैंक वालों से, पर नथु को वो नहीं मिला था. तो सीताराम ने बोला इसलिए तुम गुस्सा हो? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय. आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माय रेगुलर पे एंड दिस इज द 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week I will work in this place. And Nathu banged his pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. तो वो क्या गुस्सा था? He was very angry that his monthly salary he not received, and this is the month of 20th. मतलब 20 तारीख हो गई थी महीने की, अभी तक उसको अपनी सैलरी नहीं मिली थी बैंक के तरफ से. इस बात से वो बहुत गुस्सा था और उसने बोला कि अब मैं इसी जैसे मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं तो ये जॉब ही छोड़ दूंगा. आई विल नॉट वर्क हियर. वेल आई तो सीताराम ने बोला वेल आई विश यू लक. I will keep a lookout of any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, a big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. At the fourth home, he visited Sitaram, heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they are not giving him his pay and he wants to leave. Now what Sitaram done? He go to one house and that house lady is looking for a sweeper. उस घर वो एक घर पे गया, वहाँ के घर के जो
लेडी थी, उनको एक स्वीपर चाहिए था, तो तुरंत सीताराम ने क्या किया, अपने फ्रेंड की बात कर दी नत्थु की, कि नत्थु जो है मेरा फ्रेंड है, वो बैंक में जॉब करता है, पर बैंक वालों ने उसको पैसे नहीं दिए, इसके लिए वो जॉब छोड़ना चाहता है, वो आपके यहाँ काम करेगा। सी चिल्ड्रन, उसने तो अच्छे जेस्चर से ये बात बोली। उसने क्यों बोली ये बात सीताराम ने, ताकि उसके फ्रेंड को नया जॉब मिल जाए, बट उसने सिंपैथी गेन करने के लिए ये बात बोल दी कि बैंक वालों ने उसको उसके महीने की सैलरी तक नहीं दी है। तो ये बात उसने गलती कर दी बोल के, वो सिंपैथी लेना चाहता था पर उसने ये बात बोल दी, और इसने इस तरीके से बोला कि सामने वाला थोड़ा रॉन्ग सोच लिया। और देन व्हाट हैपेंड, is that so? Said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. And Sitaram, glad that he had been of service to both the customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. Now, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, oh my God, ये सच है, बैंक वालों ने उसको सैलरी नहीं दी है। Okay, okay, tell him to come to meet with me tomorrow. Sitaram thought he is doing good for his friend. Mrs. Srivastava had to go to some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the Pipalnagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan slipping from the heat. अभी मिसेस श्रीवास्तवा जल्दी जल्दी गई और पिपल नगर बाजार में पहुंची कपड़े खरीदने के लिए, और वहां उनको कौन मिली, उनकी फ्रेंड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण was fanning herself with a large handkerchief and she was complaining about the summer. बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, ये सब बातें जब हो गई, then Mrs. Srivastava started discussing about the morning, having exhausted with this topic. Mrs. Srivastava said, do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank cannot even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who has not received his wages for over a month. Now Srivastava ने थोड़ा तड़का लगा दिया बात में. She was making fun of all the things and she said, you know children, सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉइयों को वो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल दिया. उसने क्या बोला, सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉय को पूरे पैसे भी नहीं दे सकता है, और आज ही मुझे पता चला उसने तो अपने स्वीपर को भी मनी नहीं दी है. दैट इज द वे. शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण. अब रिमार्क भूषण को तो ये बात बहुत बड़ी लगी. उन्होंने कहा, मिसेस भूषण ने कहा, oh it is shocking, if they can't pay the sweeper they must be in a bad way, none of the other could getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search for her husband. कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई, उसको ये बात अपने हस्बैंड को बतानी थी कि गोविंद राम का जो पीपल नगर बैंक है वो तो डेट में चला गया, इट वाज इन डेट, इट कांट पे हिज एम्प्लॉइज. बात अभी इस लेवल पे पहुंच गई कि अभी वो अपने लोगों को पे भी नहीं कर पा रहा है. तो नाउ व्हाट हैपेंड, ओके, it is little bit short. Okay, now all the people within whole day passed. Pipal Nagar was a very small city. All the people know about the bank's debt. All the people have account in the bank. सारे लोगों का अकाउंट कहाँ था पीपल नगर के लोगों का, पीपल नगर बैंक में था. They are worried and they started calling the manager of the bank. First they called सेठ गोविंद राम, ऑनर को ही करेंगे जो ऑनर है, उनको कॉल किया तो उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है. व्हाई? बिकॉज सेठ गोविंद राम वाज इन कश्मीर. he has a houseboat in the Kashmir and he is enjoying his holiday. Okay, but people what understand, people understand that said Govind Ram fled from Pipal Nagar. वो पीपल नगर से भाग गए हैं क्योंकि उनका बैंक अब इस कंडीशन में नहीं है कि लोगों के पैसे वापस करे. इसलिए लोगों ने ये बात भी फैला दी, rumors go like fire in the forest, and they started making rumors that said Govind Ram fled from the Pipal Nagar. One person said, another said Govind Ram fled from the country. देश छोड़ के ही भाग गए हैं वो.
So this type of rumors started spreading. People were turned back from the counters and told to return the following day. सब लोगों ने क्या बोला, काउंटर बैंक के काउंटर पे पहुंच गए कि आज हमारी पैसे वापस करो. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break it." हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम बैंक का दरवाजा तोड़ देंगे. Fetch the सेठ, और सेठ को बाहर निकालेंगे. कुछ लोगों ने कहने लगा कि we know he is hiding in a safe deposit locker. Where he is, जो सेफ डिपॉजिट लॉकर है उसमें सेठ गोविंदराम छुप के बैठे हुए हैं. Mischief makers who didn't have a पैसा in the bank joined the crowd and aggravated their moods. Mischief makers means, बच्चों को पता है ना, who is mischief makers? जिनको इन सब मतलब कोई भी बैंक में अकाउंट भी नहीं है, उनको इन सब पर मजे लेने हैं. ऐसे होते हैं ना, क्राउड में इकट्ठे हो जाते हैं mischief makers. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money, but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. He wants it now. Chanted some of the crowd, now, now, now. अब क्या हुआ कि सारे लोग चिल्लाने लगे, अभी पैसे वापस करो, अभी पैसे वापस करो, आज के आज वापस करो, नाउ नाउ नाउ. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. और भीड़ ने क्या किया, पत्थर फेंकना शुरू किया. जैसे पत्थर फेंका, वहां जो ग्लास का बड़ा सा विंडो था, गेट के साथ ग्लास का विंडो था, वो क्या हुआ, ब्रोक हो गया. Now what happened? This all things is happened. People take their money from the bank, they go home. Now next morning, Nathu arrived next morning to sweep the step of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stone cluttering the steps. वो आके क्या देखता है, पूरे सीढ़ी पे क्या गिरा हुआ है, कांच के टुकड़े. Raising his hand in a gesture of horror, oh, ऐसे horror से हाथ ऊपर करके, and disgust he cried. What is the meaning of disgust, kids? Disgust का मतलब क्या होता है? Very angry and annoyed. Polygons, sons of donkeys, उसने बोला गुस्से से. As though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work also to be increased. उसको तो बहुत गुस्सा आया कि एक तो मेरे सैलरी नहीं देते, ऊपर से मेरा काम भी बढ़ा दिया, इतने सारे कांच के टुकड़े. He smoothed the step with the broom, scattering the refuse. Good morning, Nathu, said the washerman's boy. सीताराम उसका फ्रेंड आ गया और बोला, Good morning, Nathu, getting down from the bicycle. Are you ready to take up a new job from the first of next month? तो उसने क्या बोला, सीताराम ने उसके फ्रेंड को, क्या तुम रेडी हो नई जॉब के लिए? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. तो नत्थु ने, सीताराम ने क्या बोला, तुम्हें जल्दी से नया जॉब शुरू कर देना चाहिए नेक्स्ट मंथ से, बिकॉज ये बैंक तो गया, इसका तो बिजनेस खत्म हो गया है. हाउ इज दैट, सेड नत्थु. नत्थु ने बोला, कैसे, ये कब हुआ? He was surprised. Haven't you heard? Well, you had better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He didn't not even have bank account and sped away on his cycle. So what happened? They उसने क्या बोला, जब पूरी आधी पीपल नगर के लोग आके अपने पैसे निकाल के बैंक से चले जाएंगे, तब तुम जागोगे, तुम अभी जाग जाओ और जल्दी से पैसे ले लो. Now Nathu was shocked. Nathu went back to sweeping the step, muttering himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. अब तो उसने निश्चय कर लिया कि आज तो मैं मैनेजर से अपने पैसे लेके ही मानूंगा अपनी जो सैलरी है. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. अब वो वहां बैठ के सोचता रहा कि ये कब हुआ, बैंक का बिजनेस कब बंद हो गया, बैंक को किसने तोड़ दिया, इतना सब कुछ हो गया, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला. एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. Now children, you will tell me what is the funny part of the thing. You will tell me ideology. Raise your hand and give me good ideology. What is the ideology of this story? If someone will give you an
Yes, कौन बोलना चाह रहा है? Raise करो hand. Yes, मैत्री है. Your turn. Yes, मैत्री. स्टोरी नहीं है कोई। Dave, stop, हाँ? मैत्री will speak. मैम इसमें फनी पार्ट वो था कि जो उसका दोस्त था नथु का, उसने I can see you. I can see your face. जो नथु का दोस्त था उसने सबको बात फैला दी कि गलत बात फैला दी और उसने खुद की बात गलत सुन ली। वो सबसे कॉमेडी पार्ट लगा मुझे। Yes, part is that. Yes, he is right. Anyone else? Then I will speak. Vashvi, start. के नथु का फ्रेंड था, उसने गलती नहीं की, उसने ने को उसको जो मिस्टर श्रीवास्तव थे उसको जानबूझ के ये बात बताई थी। Yes, true. Yes, that's the answer I want. Yes, children. What is the answer? Answer is written in the name of the story. Boy who broke the bank. Who is the reason behind breaking the bank? Nathu himself, right? Nathu ही starting point था और funny part is कि उसको खुद ही नहीं पता ये कैसे हुआ. So what happened? All the rumors behind him make this uncontrolled situation. So these things happens in our society. Yes, we read something in newspaper that is not true. We don't know the real reason. People, also journalists go to the people, they ask people telling right or wrong, we don't know, but वो पढ़ के हम सुनते हैं, वो पता नहीं और उसमें कितना सच होता है. we discuss in वो बातों को लेके हम नहीं, आप ही नहीं, बड़े भी, हमारे जैसे जो बड़े आपके पेरेंट्स भी, they start discussing about the topic which is we don't know true or false. उसकी जो ट्रूथ है उसको हम कोशिश भी नहीं करते ढूंढने की. we started discussing first, सबको बताना, एंड एक ने बताया तो वो थोड़ा दूसरे तरीके से बताएगा, तीसरे चौथे बात घूमते घूमते कुछ और ही रूप ले लेती है और कुछ और बन जाता है. सो द प्रॉब्लम इज अबाउट rumors is more dangerous than fire of forest. You know children, there is one more story, the fire of forest. It is based on rumors जो है जंगल की आग की से भी ज्यादा भयानक तेजी से फैलती है. So this story is about rumors. We should talk, meaning is when we talk or discuss anything, we should understand the whole truth and then we should speak. Otherwise we should not speak. This is the main aim, and it is very nicely written. The name of the story is only the rumor. Boy who broke the bank. Actually the boy doesn't know about anything of the bank, but he is the real cause of breaking the bank, right? So I hope you understand now. Anyone else? Yes, Maitri, speak. Anyone else want to speak anything about the characters? What you understand? There is how many characters in this story? How many characters? Yes, Aritra, speak, don't say, speak. 3. 3. Classify. Tell the names. Nathu and his friend and Yes. friend Govind. Said Govindram. Yes, very good. And then more characters are there. Mrs. Srivastava. Yes, Mrs. Srivastava, Mrs. Bhushan. If you want to play the character, yes, Vashvi. Anyone else? Vashvi, speak. How many characters you can identify? Ma'am, Nathu and his friend, then Mrs. Srivastava, Mrs. Bhushan, Seth Govind, then people Nagar, Public, yes. public, yes. So if you want to play this act, you can. Okay. Now I am stopping recording. I will send this recording. Okay. Your